My dear students, in this module 4, we would like to connect, as we were saying, there were 4 civilizations, and we were sharing our own thought that a civilization give rise to a different culture. दरिया नील के किनारे ग्रीक फिलॉसफी और रोमन एम्पायर का एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल ऑलमोस्ट हर मगरबी मुल्क के अंदर इस्तेमाल हो रहा है, जिसको हम कहते हैं वेस्टर्न कल्चर. Now come down to Chinese culture, because now the Chinese culture and the Chinese model of business as well as government and the Chinese economy is also becoming important. It's not same as you find in the West. For example, Western culture में a manager of a company would like to be connected, say, with a Chinese company. Western concept of management is, let's go through the transactional mode. You mean business, I mean business. It doesn't work in Chinese culture. Yes, business will come, but first, let us develop guanxi. Guanxi is a concept which must be used in China. Chinese culture में अगर एक अमेरिकन या वेस्टर्न मैनेजर किसी प्रोडक्शन पर्पस के लिए, किसी सप्लाई चेन एक्सेसरीज के लिए, बहुत सारी चीजें हैं जो चाइना में इस वक्त प्रोड्यूस हो रही हैं, तो चाइनीज मैनेजर वुड लाइक फर्स्ट टू रिलेट विद यू, to understand you, to see where you stand. And if he would feel comfortable, then he will talk about business. Western model, they believe in short term. Chinese model, they believe in a long term focus. Remember Chinese wall की मैंने example दी थी? It was built, look at the management books, over a period of 600 years. 600 साल तक चाइनीज दीवारें चीन बनाते रहे पूरे चाइना के गिर्द. अच्छा, इन 600 सालों में बहुत सारी गवर्नमेंट्स चेंज हुई होंगी, बिल्कुल चेंज हुई, लेकिन मैंने कहा ना, गुआनची, लॉन्ग टर्म फोकस. So in other words, civilization gives a culture, and culture has its own effect and impact on the environment. Or remember, आपने पढ़ा होगा pest environment, and you like to study that. What is the political environment in the organization is working? What is the economic environment in the organization is working? What is the social environment, pest, social environment in which the organization is working? What is the technological environment? Environment is very important. So culture is related with civilization. So you should understand that culture would also have an effect on the environment. And then environment would help you to develop a kind of technology which is needed for that particular state or particular organization or particular country. Technology के बारे में एक बात समझ लीजिए. Technology is nothing more than, to me, the application of knowledge, application of idea. So you come up with a thought, you come up with an idea. Remember, idea and knowledge is explicit, is conceptual, is abstract. And when you apply this, you come up with a system, you come up with a technology. That technology could be for the civil purpose, it could be for machines, it could be for electrical distribution or electrical production. It could be also for the information. How are you going to handle the information? And of course, thought process gets affected through all these factors. Let's look at thousands of years ago
tribes organization. They also make, they used to make decisions. मैंने कहा था ना, उनका भी ट्राइब का एक सरदार होता था, क्लैन्स होते थे, कम्युनिटीज होती थी, हार्वेस्ट और माइनिंग और फिशिंग और हंटिंग का वो जमाना होता था. चलिए कह लीजिए कि एग्रेरियन इकोनॉमी थी. मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, thousands of people working for a particular purpose. It could be to defend a state, to defend a country from the enemy, or it could be to provide an internal or external defense. And in the old days, it was used, armies were used to conquer the land, to capture the land. Because land was also a resource in those days. रोमन एम्पायर हम कहते हैं कि रोम से लेकर अफ्रीका और फिर एशिया और फिर रशिया और न जाने कहां तक उनकी एम्पायर थी, जहां तक रोमन आर्मी पहुंच सकती थी. पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन, आदम स्मिथ की इकोनॉमिक फिलॉसफी तो आई है 1776 में, लेकिन क्या उससे पहले ऑर्गेनाइजेशंस नहीं थी? हम स्टडी करेंगे, हम देखेंगे बेहतरीन सिटी गवर्नमेंट्स थी, बेहतरीन स्टेट गवर्नमेंट्स थी, लेकिन वो पब्लिक थी. इन अदर वर्ड्स, पब्लिक ऑफिशियल्स जो होते थे, पब्लिक मिनिस्टर्स जो होते थे, पब्लिक सेक्रेटरीज जो होती थे, ये उनका काम, उनकी ड्यूटी और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी कि वो रिसोर्सेज को यूज करें पब्लिक के लिए, सिटीजन्स के लिए, सोसाइटी के लिए. एजुकेशन प्रोवाइड करें, हेल्थ प्रोवाइड करें, ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करें, सिक्योरिटी प्रोवाइड करें. ये उनका काम था, पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस. और मुझे रिकॉल करने दीजिए कि कुछ रूलर ऐसे भी आए कि जिन्होंने कहा कि अगर दरिया फरात के किनारे एक कुत्ता भी भूख से मर गया तो आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. दिस इज द काइंड ऑफ पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन एंड द पब्लिक रूलर्स वी फाइंड इन द हिस्ट्री. ये भी तो एक मैनेजमेंट मॉडल है ना. और आखिरी बात हम कर रहे हैं पिछले 200 साल की, जिसमें आप ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस की. बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन तो अभी 1900 या 1776 के बाद मशीन आई, इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशंस वजूद में आई, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद साइंटिफिक मैनेजमेंट का तस्वुर सामने आया, और ये पिछले को 100 साल की कहानी है. बट सर्टनली व्हेन वी लुक एट दिस, कीपिंग दिस इन माइंड, we come up with different management and leadership models. So my dear students, keep in mind that the context of the civilization, of the environment, creates culture. And culture will have its own theory. That theory of motivation, that theory of goal achieving, that theory of leadership which is developed in West may not be applicable in China or in Middle East. And the last part is that technology keeps on changing because the new knowledge, new thought process keeps on coming. 1985 में P1 कंप्यूटर 60,000 का मैंने खरीदा था. आज P5 के जमाने में कोई मुझे उसको 50 रुपए देने के लिए तैयार नहीं है. टेक्नोलॉजी इज ओल्ड. नॉलेज तो उसमें भी था, बट a new knowledge gives you new technology when it is applied, and it gives you new model. Online business concept which you see today because of information and communication technology was not available before even 1970. तो मैनेजमेंट मॉडल, मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट अकॉर्डिंगली चेंज होंगे और नई थ्योरीज सामने आएंगी. तो न्यू नॉलेज would be blended with the old thought and old knowledge and will give you new framework to be researched upon, to be applied upon, to make decision on that basis. Thank you, and thank you very much.